हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर प्रगति, योर होलिस्टिक सर्जन, एंड आज हम बात करेंगे उस टॉपिक की दैट इज बजिंग इन द वर्ल्ड ऑफ डेंटल हेल्थ, दैट इज विजडम टीथ। सो क्या हमें रखना चाहिए और शुड वी से गुड बाय टू देम? लेट्स फाइंड आउट। Now before we jump into the debate, let's find out what wisdom teeth are. ये last set of molars होते हैं जो late teens या early 20s में आते हैं usually, इसलिए इन्हें wisdom teeth बोला जाता है। The term wisdom. So आप जो ये सोचते थे कि इनके आने से हमें wisdom आ जाती है, that is clearly not true. So there are two school of thoughts here: proactive removal approach and the conservative approach. So in the proactive removal approach, many surgeons, dental professionals advocate that removing the wisdom teeth before they are completely erupted is generally beneficial for the overall dental health. यानी कि wisdom teeth के आने से पहले ही अगर हमें उन्हें extract कर दें या निकाल दें तो ये हमारी general dental health के लिए अच्छा रहेगा. Now, these dental professionals believe that removing the wisdom teeth early will prevent many other issues like pain, swelling, damage to the neighboring tooth. ये सब issues पहले से ही हम take care कर लेंगे अगर हम इन्हें पहले ही निकाल देते हैं. So a second school of thought is there which suggests a relatively conservative approach. They advocate that not every individual needs to get their wisdom teeth extracted. They argue that with regular dental checkups and cleanups, it is possible to manage the risk associated with these wisdom teeth. So, is proactive removal approach an overreaction? Let's check. But before we check that, guys, don't forget to subscribe to this channel for further health-related videos. Now, many studies and researches have been conducted related to this topic, especially the wisdom tooth extraction. Should we remove them or should we not? Still, there is no scientific evidence which suggests that removal of the wisdom teeth before they are fully erupted will be beneficial and vice versa. So, the topic is still debatable. Now, hashtag my opinion. The decision of removing a wisdom tooth should be based purely on the best evidences collected and according to the clinical experience. There is clearly no one size fits all in this condition as every individual's dental health is totally different. According to me, the points to be considered before taking a decision should be the condition of the tooth, that is the wisdom tooth. Is it caries or is it not? Of course, if it's caries and there is a risk of infection in the future, it should be extracted. The proximity to the nerve. So जो हमारा wisdom tooth होता है उसके नीचे एक nerve रहती है, that is the inferior alveolar nerve that gives sensory sensations to lower lip, the mandible, जो ये नीचे का जबड़ा होता है. तो इसकी proximity देखना भी बहुत ज़रूरी है कि tooth वो nerve से कितना engrossed या कितना embedded है. तो ये factors और जैसे सराउंडिंग बोन की कंडीशन, हमारा टूथ रिमूवल करने का डिसीजन हमारे बोन स्ट्रक्चर को कितना डैमेज कर सकता है, क्या हमारा जो नेबरिंग टूथ है वो हमारे विजडम टूथ से अफेक्ट हो भी रहा है या नहीं. अगर कोई बच्चा है जिसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराना है, लाइक टीन एज में मोस्टली इन मेनी केसेस देयर इज एन इंडिकेशन कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए स्पेस चाहिए रहता है. तो तब जनरली दी ऑर्थोडोंटिस्ट और जो स्पेशलिस्ट हैं ब्रेसेस के, जो वायर ट्रीटमेंट के, वो सजेस्ट करते हैं कि उन्हें विजडम टूथ निकलवा के लेना पड़ेगा वो बच्चे को, ताकि वो स्पेस क्रिएट हो सके बाकी टूथ के लिए, मूवमेंट के लिए. तो उन केसेस में हम सजेस्ट करते हैं निकालना. सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर करने पड़ते हैं निकालने से पहले. According to me, all these points should be considered and an informed decision should be made. In case of any doubt, it is always advisable to consult a specialist and not make decision according to your own research and judgment.